Hello friends and welcome to my channel. Today we are going to learn collective noun. So let's get started. So a collective noun is a single word for a group and it represents people, animal, etc. So friends, collective noun का यूज यूजुअली कॉन्वर्जेशंस में किया जाता है. So आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. बिकॉज बहुत बार आपने एडवांस्ड स्पीकर्स को ये कलेक्टिव नाउन्स यूज करते हुए सुना होगा. एंड अगर आप भी अपने कॉन्वर्जेशंस में इन कलेक्टिव नाउन्स का यूज करना चाहते हैं देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो फ्रेंड्स, in this video we are going to learn 20 examples of collective noun. So the first one is army of soldiers. It means सैनिकों की सेना या सैनिकों का समूह. The next one is band of musicians. It means संगीतकारों का समूह. Next one is board of directors. It means निर्देशक मंडल. The next one is choir of singers. It means गायकों का समूह. The next one is class of students. It means छात्रों की कक्षा या विद्यार्थियों का समूह. The next one is crew of sailors. It means नाविकों का दल. Next one is crowd of people. It means लोगों की भीड़. The next one is panel of judges. It means विशेषज्ञों का पैनल. The next one is team of athletes. It means खिलाड़ियों की टीम. The next one is troupe of actors. It means अभिनेताओं की मंडली. The next one is colony of ants. It means चींटियों की बस्ती. Next one is flock of birds. It means पक्षियों का समूह. Next one is herd of elephants. It means हाथियों का झुंड. Next one is pack of wolves. It means भेड़ियों का झुंड. Next one is pride of lions. It means शेरों का झुंड. The next one is bouquet of flowers. It means फूलों का गुलदस्ता. Next one is bunch of keys. It means चाबियों का गुच्छा. The next one is bundle of sticks. It means लाठियों का बंडल. The next one is galaxy of stars. It means तारों की आकाशगंगा. Next one is set of tools. It means उपकरणों का set. So friends, these were 20 examples of collective nouns. So friends, इन examples का use आप अपने conversation में करके अपनी इंग्लिश को improve and advanced कर सकते हैं. तो आप भी अपने sentences में इन collective nouns का use कीजिएगा and मुझे comment करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है. So friends, that's it for today's video. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.